Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Jai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jai Om Vishnupada Paramahansa Paribhaja Jagatari Ashtotara Satoshi Shimad Abhaya Chandraravinda Bhaktivedanta Swami Maharaj Shri Prabhupada Ki Jai Nityalila Pravishta Vishnupada Ashtotara Satoshi Shimad Shri Bhakti Siddhanta Saraswati
Goswami Maharaj, Thakur Prabhupada ki, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki, Namacharya Shri Haridas Thakur ki, Prem se kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Srivasari Gaur Bhakti Shri Radha Krishna Gopaya Samakunda Radha Kundakiti Gopanan ki Vrindavan Dham ki Maya Murdham ki Gangamai ki Yamunamai ki Tulsi Devi ki Bhakti Devi ki Samaveta Bhaktivinoda ki Shri Harinam Sankirtan ki Vihat Midanga ki Tai Gaur all glory to the assembled devotees, all glory to the assembled devotees, all glory to the assembled devotees, all glory to Shri Guru, Shri Gauranga. Hare Krishna. I don't think I'll read anything from Bhagavatam now, just speak, you'll allow me. Om Jnana Timirandasya Kiranjana Shalakaya Chakshuru Militam Yena Tasmai Sri Gurave Namah Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupakada Mahyam Dadati Swapadantikam Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Kacharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Rishatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasari Gaur Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Can we have a parallel Hindi translation? So I'm very happy to be here in Kurukshetra. तो महाराज जी बोल रहे हैं कि वो अत्यंत प्रसन्न है यहाँ पे कुरुक्षेत्र में आगे. Actually, the whole world is in some ways like Kurukshetra. अगर देखा जाए तो पूरा विश्व किसी न किसी प्रकार से कुरुक्षेत्र ही है. Krishna says, Prakriti Sthani Karshati. Even you see the traffic on the road, it's struggle for existence. कृष्ण बोलते हैं प्रकृति स्थानी कर्षति. अगर हम सड़क पे चलता हुआ ट्रैफिक को भी देखें वो भी जीवन के लिए संघर्ष है. So many little wars everywhere, threat of atomic warfare, so many things. हर जगह कुछ न किसी प्रकार से युद्ध चल रहा है, परमाणु युद्ध भी के किनारे है, बहुत सारी चीजें हैं. But the real Kurukshetra, this was Kurukshetra 5,000 years ago. परंतु ये असली कुरुक्षेत्र है 5000 वर्ष पूर्व. But that Kurukshetra continues. और वो कुरुक्षेत्र आज भी है. And it has taken the form of the Sankirtan movement. It has taken the form of the Sankirtan movement. और ये कुरुक्षेत्र में जो धर्म क्षेत्र में जो युद्ध होता है वो अब संकीर्तन आंदोलन का रूप ले चुका है. Because what was Kurukshetra? It meant putting Yudhishthira on the throne and overcoming the materialistic way of running the world by Duryodhana. तो कुरुक्षेत्र का जो युद्ध था उसका पर्पस क्या था कि जो भौतिक तरीका था दुर्योधन का विश्व को चलाने का उसको हटा करके धर्मराज युधिष्ठिर को पूरे विश्व का राज्य बनाना. So now the leaders in the world, they're not even as qualified as Duryodhana. जो पूरे विश्व के अलग-अलग नेता हैं वो दुर्योधन के समान भी योग्य नहीं है. Actually, Yudhishthira said Duryodhana is a very good manager. Let him rule, no problem. So युधिष्ठिर ने कहा था कि दुर्योधन बहुत अच्छे मैनेजर हैं, बहुत अच्छे मैनेजर हैं, उनको राज्य करने थे.
But Krishna was not in agreement. कृष्ण से सहमत नहीं थे. Krishna wanted that he wanted to speak Bhagavad Gita for the benefit of everyone in the world. कृष्ण यहाँ पे भगवद गीता बोलना चाहते थे पूरे विश्व के भले के लिए. Bhagavad Gita means that which actually began the war against the materialistic way of life, and that which gives us the means to conquer that same war that we are all fighting to become pure devotees of Krishna. तो भगवद गीता का अर्थ है कि वो जो भौतिक चीजों के अगेंस्ट भौतिक चीजों के विरुद्ध युद्ध है उसको जीतना हमारे अंदर है कि हम उस युद्ध को जीत सकते हैं और शुद्ध भक्त हो सकते हैं. So just like the message of the Bhagavatam was born in one sense for the modern age when Srila Prabhupada was sitting in Radha Damodar temple in front of Rupa Goswami and Sanatana Goswami's samadhi. So श्रीमद् भागवतम का जो संदेश है वो पूरे विश्व के लिए प्रकट हुआ था जब श्रील प्रभुपाद राधा दामोदर मंदिर में रूप गोस्वामी की समाधि के सम्मुख बैठे थे. So I see this temple has a similar, this particular project, this temple has a similar destiny. और महाराज कह रहे हैं कि ये वो देख रहे हैं कि ये जो कृष्ण मंदिर प्रोजेक्ट है इसका भी भाग्य उसी प्रकार से है. Srila Prabhupada wanted that Krishna consciousness would rule the world. श्रील प्रभुपाद जी चाहते थे पूरे विश्व में कृष्ण भावना पर आंदोलन हो. Prabhupada said, my big problem is that I can only think big. प्रभुपाद जी कहते थे मेरी बड़ी समस्या है कि मैं सिर्फ बड़ा ही सोच सकता हूँ. So sometimes we have the same attitude as King Yudhishthir. Better to let one of these demons rule. They're okay. They know how to manage. हमारे भी कभी युधिष्ठिर महाराज की तरह भाव होता है कि ये जो असुर लोग हैं ये लोग रूल कर रहे हैं ये लोग नेता बने हुए हैं इनको करने देते ये लोग जानते हैं कैसे मैनेज करना. Then I don't have to take so much trouble. I can have my deities at home and just peacefully chant Hare Krishna. हमें ज़्यादा समस्या नहीं होगी. हम आराम से अपने घर में शिव विग्रह रख सकते हैं और आनंद में हरे कृष्ण जप कर सकते हैं. But Srila Prabhupada, that was not his mood. और श्रील प्रभुपाद का ये भाव नहीं था. His mood was Kripambudir Paradhuka Dukhi. His mood was feeling so much compassion that it hurts to see when others are suffering. श्रील प्रभुपाद का बहुत करुणा से भरा हृदय था. वो अन्यों के दुख को देख के उनको बहुत दर्द होता था. Just like Prasad Maharaj said, that my only lamentation is that people are turning their backs to Krishna. और प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मेरा एक ही दुख है कि लोग अपनी पीठ भगवान श्री कृष्ण की तरफ कर रहे हैं. And Maya Sukaya Param Udvahato Vimudya. And they are making so many arrangements to try to enjoy in the mode of ignorance. And therefore, he said, Naitan Vihaya Kripana Vimamuksha Eko, that even though these people are miserable, they are Kripanas. Even though these people are miserable and they are Kripanas, still I cannot simply look for my own liberation, for my own happiness. Because my Lord, without your mercy, no, I don't see any means of relief for them.
This was the mood of Prasad Maharaj. ये भाव है श्री श्री प्रहलाद महाराज का। That was millions of years ago. कई युगों पूर्व। So this Gaudiya Vaishnava tradition of preaching the Bhagavatam and preaching Bhagavad Gita is very, very old. It's not something that Prabhupada invented. और ये भगवद गीता और भागवत प्रचार करना, ये जो परंपरा है, ये बहुत बहुत पुरानी है। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका निर्माण प्रभुपाद जी ने किया। Srila Prabhupada said, I will not be satisfied until every person on the planet has my books. प्रभुपाद जी ने कहा कि वो तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक कि इस पृथ्वी पे हर व्यक्ति के पास उनकी पुस्तकें नहीं होंगी। And Prabhupada said that one devotee said, but Prabhupada, when everybody has his books, then how will the Sankirtan movement go on? प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि श्री प्रभुपाद, अगर हर एक के पास आपकी पुस्तकें हो जाएंगी तो आगे संकीर्तन मूवमेंट कैसे बढ़ेगा? And Prabhupada said, more people will be born. प्रभुपाद जी ने बोला उसके बाद और लोगों का भी जन्म होगा। And even then, but if everybody has books in their home, as soon as they're born, they'll have these books. No. और परंतु जिनका जन्म होगा उनके घर में तो पहले से पुस्तकें हैं प्रभुपाद जी, तो फिर क्या होगा? And Prabhupada said, then we can go to another planet. प्रभुपाद जी ने बोला फिर हम एक दूसरे ग्रह पे जाएंगे। So the point is that we are continuing the Kurukshetra war. तो हमारा केंद्र बिंदु ये है कि हम कुरुक्षेत्र के युद्ध को आज भी जारी रखे हुए हैं। One time Srila Prabhupada was giving class and he said, we must fight. No. एक बार प्रभुपाद जी क्लास ले रहे थे, उसमें उन्होंने बोला कक्षा में कि हमें युद्ध करते रहना है। To establish this Krishna consciousness, we have to fight against Maya and how she has conquered. She has conquered the whole world. We must fight very strongly. हमें जिसमें देखना है कि कैसे पूरी माया ने पूरे विश्व को लेकर रखा है, तो हमें बहुत बहुत कड़ा युद्ध करना है। Prabhupada said, this is Krishna consciousness. और ये कृष्ण भावना है। Krishna was fighting from 3 months old until the end. प्रभुपाद जी बोले कि कृष्ण 3 महीने की आयु से ही युद्ध शुरू कर दिया था, अंत तक करते रहे। So we're already behind. No? तो हम तो बहुत पीछे हैं। We only started fighting maybe when I was 15, 20, 25. No. तो महाराज कह रहे हैं हम बहुत पीछे हैं, हमने 15, 20, 25 की आयु से युद्ध शुरू किया। So we have to catch up. No. तो हमें अभी जो पीछे बचा हुआ है उसको भी हमें पूरा करना है। Just like Krishna says in Bhagavad Gita that those who were pious in their previous lives and are pious, living piously now, then no, they can become Krishna conscious. तो जो लोग कृष्ण कहते हैं जो कि पूर्व जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और इस जीवन में पूर्ण रूप से रह रहे हैं, वो लोग कृष्ण भावना में को स्वीकार कर सकते हैं। And in this sense, pious means Krishna conscious. और यहाँ पे पुण्यवान होना का सही अर्थ है कृष्ण भावना में होना। Shringata Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana. That punya in this age means Shravana Kirtana. इस जगह में जो पुण्य श्रवण कीर्तन जो पुण्य है वो श्रवण कीर्तन से आने वाले पुण्य के बारे में बात हुई है। Punya does not mean be a nice Hindu. पुण्य का मतलब ये नहीं कि सिर्फ अच्छा हिंदू जीवन जिया जाए। One time I was giving lecture and one Indian man, he said, it is not our dharma to give this knowledge to non-Hindus. No. एक बार महाराज जी कहीं पे प्रवचन दे रहे थे, तो एक व्यक्ति खड़ा हो गया, एक हिंदू व्यक्ति बोले ये हमारा धर्म नहीं है कि हम ये ज्ञान किसी गैर हिंदू को दें। And then I said, but Lord Shiva says, what is it? I can't remember the verse. Anyway, he says that the Vaishnava is so merciful that if he's in heaven or if he's in hell, he is simply preaching Krishna consciousness. So महाराज ने हमको बोला कि शिव जी ने कहा है कि भक्त चाहे स्वर्ग में हो या नरक में हो, तो सिर्फ कृष्ण भक्ति का प्रचार करता है। Is everyone in hell are they Hindus? No.
जिस नर में लोग हैं वो हिंदू हैं। Narada Muni is preaching in the heavenly planets and the hellish planets. नारद मुनि स्वर्ग में भी प्रचार कर रहे हैं और धर्म में भी प्रचार कर रहे हैं। So this is our duty, and to fight against Maya. ये हमारा कार्य है माया के विरुद्ध युद्ध करना। But actually, we're not, in one sense, we're not fighting against Maya. एक प्रकार से हम माया के विरुद्ध युद्ध नहीं कर रहे हैं। Maya is helping us. माया हमें सहायता कर रही है। She is making everyone's life miserable. माया हम सभी के जीवन को दुख से भर दे रही है। And by doing that, then we can tell people, this world is dukkhalayama shashvatam, so please wake up. Please wake up and try to be happy. You want to be happy, we can give you real happiness. माया जब सभी के जीवन दुखदायी कर रही है तो हम लोगों के पास में जाके बोल सकते हैं जीव जागो अगर तुम्हें आनंद प्राप्त करना है तो भगवान का संदेश। So Maya is Krishna's pure devotee. No? तो माया देवी कृष्ण की शुद्ध भक्त है। Daivi Yasha Gunamayi. No, she's Daivi. She's divine. माया देवी दैवी है, दिव्य है। So she's helping us. But we have to make sure that we are on Krishna's side so that she will be helping, and not on Maya's side so that she will be trying to wake us up. No? हमें माया हमारी सहायता कर रही है, परंतु हमें ध्यान रखना होगा कि हम कृष्ण की साइड में हों जिससे माया की हमें सहायता मिले, और हम माया की साइड में होंगे तो माया से पिटाई करेंगे। And therefore we have to take the message of Bhagavatam and Bhagavad Gita and every day hear it very carefully and chant the holy name so carefully so that we can work together with Maya to wake up the fallen conditioned souls. तो हमें भागवतम और भगवद गीता के संदेश को बहुत ध्यान से देना होगा। प्रतिदिन में साधना करके हम अच्छे से अगर हम भगवान श्री कृष्ण की तरफ रहेंगे तो हम माया देवी के साथ मिलकर लोगों को इस भौतिक जीवन से जगा सकते हैं। Actually, at the end of Kali Yuga, when Krishna was present, Maya approached him and she said, "My dear Lord, all of your devotees, they're worshipping you in bliss, and I have to make everyone miserable." तो एक बार माया देवी भगवान श्री कृष्ण के पास हे भगवान, सब कोई आपकी पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, सब आपकी सेवा कर रहे हैं, और मुझे लोगों को आपको भूलने की सेवा में लगाना है। So, therefore, I request that please let me serve like other devotees. But Krishna said, "No, your service is very important." तो माया देवी ने बोला, हे भगवान, आप मुझे कृपा कीजिए कि मैं भी अन्य भक्तों की तरह आपकी सेवा में लग सकूं। Without you, how would the living entities awaken from their ignorance? तो भगवान ने बोला, नहीं, तुम्हारी सेवा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तुम लोग को यातना दे रही हो, तो उसके बिना लोग कैसे जागेंगे? And so, but she said, but my Lord, please just allow me at some point just to worship you. तो माया देवी ने बोला कि हे भगवान, किसी पॉइंट पे, किसी समय में मुझे आपकी सेवा, आपकी आराधना करने का अवसर जरूर दीजिए। And Krishna said, "All right, in my next incarnation, you can be my pure devotee." और भगवान ने बोला, ठीक है, मेरे अगले अवतार में तो मेरे शुद्ध भक्त रूप में आ सकते हैं। So in next incarnation was Lord Chaitanya Mahaprabhu, and Maya became the pure follower of Haridas Thakur. अगले अवतार में श्री चैतन्य भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, और माया देवी हरिदास ठाकुर की शुद्ध शिष्या बनी। So Krishna simultaneously satisfied the desire of Maya and at the same time showed that the way we can become a pure devotee immediately is by the pure chanting of the holy name. तो भगवान श्री कृष्ण ने माया देवी की इच्छा को भी पूरा किया और ये बताया, पूरे विश्व को सिखाया कि हम एकदम से शुद्ध भक्त बन सकते हैं श्री हरि नाम का शुद्ध जप करने से। So just like Lord Vishnu has 4 weapons, no? जैसे भगवान विष्णु के पास 4 अस्त्र हैं,
So we also have weapons. हमारे पास भी अस्त्र है, We have the holy name. हमारे पास हरि नाम है, We have Srila Prabhupada's books. हमारे पास प्रभुपाद की पुस्तकें We हैं, have Krishna Prasadam distribution. हमारे पास कृष्ण प्रसाद है, And we have preaching. हमारे पास प्रचार है, So we also have our 4 weapons. हमारे पास भी 4 अस्त्र हैं, 2 of them are soft and 2 of them are hard. 4 उसमें से 2 कोमल हैं और 2 थोड़े कड़े हैं। Because it's hard for people to chant the holy name. लोगों को मुश्किल है हरि नाम जप करना। It's easy to do a kirtan, but it's hard to chant every day carefully, minimum 16 rounds without offenses. कीर्तन में भाग लेना थोड़ा आसान है, परंतु प्रतिदिन 16 बार तेरह बार जप करना बहुत मुश्किल है। And it's hard to read Srila Prabhupada's books. और बहुत कठिन है प्रभुपाद जी की पुस्तकों का नहीं। It's a miracle that we can even sell them. हम हमको बेच पा रहे हैं ये प्रभुपाद जी की पुस्तकों को किसी चमत्कार से कम नहीं है। How many people can sell something that tells you that everything you're doing is wrong? कितने लोग ऐसे सफलता से किसी चीज को बेच सकते हैं जिसको पढ़ने के बाद उनको ये पता चले कि जो भी तुम कर रहे हो सब बकवास है। This book will call you a fool and a rascal. ये पुस्तक खरीदो, ये पुस्तक तुम्हें धूल बोल बकवास बोलेगी। And tell you, hey, you have to change everything you're doing. जो भी तुम कर रहे हो वो सब तुम्हें बदलना पड़ेगा। And you have to give up all of your attachment. ये मतलब You have to give up all of your attachments. आपको अपनी सारी आसक्तियाँ, समस्त आसक्तियों को त्यागना होगा। So how many people would buy that book? और कितने लोग ऐसी पुस्तक खरीदेंगे? But yet, by Krishna's mercy, we are selling millions and millions and millions of books. और तभी कृष्ण की कृपा से हम लाखों पुस्तकें बेच रहे हैं। I have one lady, ophthalmologist, who's originally from South India. महाराज जी एक माता जी को जानते हैं जो कि आँखों की डॉक्टर हैं। So she gave me treatment so many years for free. उन्होंने महाराज जी का कई वर्षों तक फ्री में वो इलाज किया। So I gave her a set of Bhagavatam. और महाराज ने उनको एक भागवतों का सेट उपहार में दिया। And she started reading it, and then she commented to me that this is very difficult, but it's telling me to do so many things I don't want to do. महाराज से माता जी ने बोला ये बहुत मुश्किल किताब है, ये मुझे इतनी सारी चीजें कहने को कर रही है जो मैं कहने को कह रही है जो कि मैं करना नहीं चाहती। Being an intelligent lady, she kept reading, and then she said, "Thank you very much, because now I'm understanding, by the mercy of Swami Prabhupada, the real purpose of life." तो माता जी ने बोला कि माता जी बुद्धिमान थी, उन्होंने पुस्तक पढ़नी जारी रखी और फिर बाद में उन्होंने बोला कि अब मैं समझ पा रही हूँ स्वामी प्रभुपाद जी की कृपा से जीवन का असली उद्देश्य क्या है। So she's from South India, the bastion of Dharma. वो दक्षिण भारत से है जहाँ पे धर्म का स्थान है। And still she could not understand. और तभी वो इस चीज को समझ नहीं पाई। So this war against Maya's influence is so special that by the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu, the whole world can easily be converted. ये माया के विरुद्ध ये जो युद्ध है ये इतना महत्वपूर्ण है कि प्रभुपाद जी की कृपा से पूरा विश्व परिवर्तित हो सकता है। But there's only one obstacle. तो एक ही इसमें बीच में obstacle है। And that is our lack of determination. और उसमें वो obstacle है हमारी दृढ़ता की कमी। We have to be so. Srila Prabhupada taught us what is real determination. और प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया कि असली दृढ़ता क्या है। And His Holiness Gopal Krishna Maharaj, simply his life mission was just to fulfill that desire of Srila Prabhupada with great determination to give Krishna consciousness. और श्री गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज जी का पूरा जीवन
प्रभुपाद जी की उस इच्छा को पूरा करते हुए पूरे दृढ़ रहना था। And so many great devotees in this movement are showing us that we must have this determination. और इस आंदोलन में कई सारे महान भक्त हैं जो कि हमें दिखा रहे हैं कैसे हम इस दृढ़ता का पालन कर सकते हैं। And if we have enough determination, then the whole world will become Krishna conscious. और अगर हमारे पास उचित दृढ़ता होगी तो पूरा विश्व कृष्ण भावनाग्रस्त हो जाएगा। Some people think this war in Ukraine, the war in Gaza Strip, and so many conflicts and so many demoniac governments, this is very bad. तो कई लोग कहते हैं कि यूक्रेन में युद्ध है, गाजा में युद्ध है, इतनी जगह असली सरकार है, ये सब बहुत बुरा है। But we think these people are helping us because they are making everyone's life miserable. हम सोचते हैं कि ये लोग हमारी सहायता कर रहे हैं, कैसे सहायता कर रहे हैं, सबके जीवन को दुखी बनाते हैं। And make it easier that people will accept books. और इस तरह से लोग हमारे लिए आसान हो जाता है कि लोग प्रभुपाद जी की पुस्तकों को स्वीकार कर सकें। So therefore, a devotee always sees that what is happening in the world is arranged by Krishna so that people can ultimately take shelter of him. तो एक भक्त इस दृष्टि से पूरे विश्व में होने वाली परिस्थिति को देखता है कि ये सब भगवान श्री कृष्ण के अनुसार हो रहा है जिससे लोग कृष्ण भावना प्रभावित हो सके। So just as Krishna arranged the battle of Kurukshetra 5,000 years ago, even against the desire of the Pandavas. और जिस प्रकार से कृष्ण ने 5000 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र का युद्ध, महाभारत के युद्ध की रचना की थी, हालांकि पांडवगण भी नहीं चाहते थे उस युद्ध को। We should allow Krishna to convince us that give up your complacency, give up your comfort zone, and give your life to the Sankirtan mission. और हमें श्री कृष्ण को भगवान श्री कृष्ण को अनुमति देनी होगी कि हमें वो हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकाले। So these are some thoughts that I had being here in this epicenter of the modern Kurukshetra war. और महाराज कह रहे हैं कि ये मेरे कुछ विचार थे इस स्थान पे जो कि वर्तमान युग में जो कुरुक्षेत्र युद्ध चल रहा है उसका केंद्र स्थान। So please, all of you go out, distribute Krishna consciousness, do kirtan in such a way that it will vibrate and make this war conquer the ignorance that is covering the world. तो सभी भक्तों से महाराज कह रहे हैं कि अनुरोध है कि आप जाएं, उसको प्रचार करें और पूरे विश्व में इस कृष्ण भजन को। Thank you all very much. Hare Krishna. सभी को धन्यवाद। हरे कृष्ण। So any questions or comments? किसी को कोई प्रश्न और कमेंट? किसी को कोई प्रश्न? Okay. Oh, here's. Maharaj, my question is, how can we become more determined? प्रभु जी का प्रश्न है कि हम और दृढ़ कैसे हो सकते हैं? The answer to all how-to questions is chant Hare Krishna purely. इस सारे प्रश्नों का उत्तर है कि हम ठाकुर को अच्छे से करें And associate with the Vaishnava. और भक्तों का साथ करें। और कोई प्रश्न? Okay. Well, I have a question. When we go and join this war against Maya, Lord Chaitanya has raised. So many times the struggle becomes very, very hard and there are many challenging things to do. For example, they're having this mega temple coming up, and in order to build that temple at the same time simultaneously preach, the war becomes very, very hectic. Many times it's quite taxing also. So always there's a thought looming
that we can take a little soft back step and have a little more comfortable space where we can chat comfortably, hear comfortably, and then do as much as comfortable to us. So, what should be a proper attitude and how we can keep ourselves fit and all that. Say that. तो हमारे पास में जब हम माया के विरुद्ध हम युद्ध करते हैं और कभी कभी वो युद्ध बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे यहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है, इसके निर्माण कार्य में साथ में प्रचार इत्यादि करने में इतना संघर्ष हो जाता है कि वो हमारे व्यक्तिगत जीवन पे भी बहुत कैसे टैक्सिंग हो जाता है। तो ऐसे में हमेशा एक विचार अपने मन में रहता है कि हम थोड़ा सा एक कदम पीछे ले लें, थोड़ा आराम से जीवन जीते हुए थोड़ा अपना भजन करें, साधना करें, जितना हो पाए उतना करें। तो क्या प्रॉपर एटीट्यूड होना चाहिए और उस मार्ग में हम अपने आप को कैसे दृढ़ रखें। So you can very comfortably chant and hear Bhagavatam in the morning. कि आप बहुत कंफर्ट के साथ में सुबह जप कर सकते हैं और भागवतम सुन सकते हैं। You have from 3 in the morning to 10. आपके पास सुबह 3 बजे से 10 बजे तक का समय है। 7 hours, or you can be comfortable, kirtan, chanting. 6-7 घंटे आपके पास अच्छे से जप करने के लिए, कीर्तन करने के लिए, श्रवण करने के लिए, Take prasadam. और प्रसाद लेने के लिए। Then we go out and we fight for Krishna. और उसके बाद युद्ध का समय है। Then we come back, we hear Bhagavad Gita and so on, chant some more. और फिर हम आते हैं, भगवद गीता श्रवण करते हैं, थोड़ा जप करते हैं। Here's some Krishna books, some Chaitanya Charitamrita. कृष्ण को पढ़ते हैं, चेतन चरितामृत पढ़ते हैं। Otherwise, what would we do all day long? Otherwise, what would we do all day long? अगर हम ये नहीं करेंगे तो पूरे दिन हम क्या करेंगे? Just sleep and eat? No. सिर्फ सोएंगे, खाएंगे। So we should be very happy to be engaged in this war. No. और हमें बहुत प्रसन्न होना चाहिए इस युद्ध में भाग लेने। Before the war of Kurukshetra, the Pandavas had to go out and convince different kings to join them and to collect taxes. और युद्ध के पूर्व जो पांडवों को सारे स्थान पे जाना था और अलग अलग राजाओं के पास में उनसे कर वसूलना था। Wars cost money, no? और इन युद्ध में बहुत धन लगता है। So this war also will cost money. No? तो यहाँ पे भी जो युद्ध चल रहा है उसमें भी बहुत धन लगेगा। Build a strong headquarters from which the forces of Krishna consciousness, or the force of Bhagavad Gita, will emanate out throughout the world. इतना बड़ा हम हेडक्वार्टर बना रहे हैं जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की सेना रहेगी और पूरे कृष्ण भावना फैलाने के लिए जाएगी। And then all the satellites around the world, all the temples, no? और जितने भी अन्य मंदिर हैं वो सैटेलाइट के रूप में कार्य करेंगे। You should feel a great responsibility that you're here in this place where Bhagavad Gita is coming from. आपको ऊपर बहुत जिम्मेदारी होनी चाहिए, आपको महसूस करनी चाहिए क्योंकि आप उस स्थान पे हैं जहाँ से भगवद गीता आ रही है। Very special service that you have. और बहुत महत्वपूर्ण सेवा है। Of course, other devotees may feel the same way in other places. और अन्य जो स्थान पे हैं वो भी इस प्रकार से महसूस कर सकते हैं। Just like one time Srila Prabhupada was in New Vrindavan, and he said that Vrindavan Chandra is the most beautiful deity of Krishna. प्रभुपाद एक बार वृंदावन में थे और वहाँ पे उन्होंने राधा वृंदावन चंद्र के दर्शन किए। बोले वृंदावन चंद्र सबसे सुंदर विग्रह है भगवान श्री कृष्ण के। Then he went to London and he said, London Ishwara is the most beautiful deity we have. So Shruti Kirti Prabhu said, Prabhupada, which one is more beautiful? And Prabhupada said, they are all more beautiful. And Krishna's beauty is always increasing.
कृष्ण की सुंदरता हमेशा दर्शन करती रहती है. Just like between Gopal and uh, and Gopinath, that in Ramuna, Krishna revealed that we are the same. No? और रेमुना में ये जो गोपीनाथ जी ने उन्होंने वहाँ पे लोगों को ये साक्षात कराया कि गोपीनाथ और गोवर्धन और गोपाल जी दोनों में कोई भेद नहीं. So Madhavendra, you can give your sandalwood paste to Gopinath. सभी माधवेंद्री गोपाल जी ने बोला माधवेंद्री आप जो मेरे लिए चंदन ला रहे हो गोपीनाथ को बता सकते. So all the devotees are fighting this war against Maya everywhere around the world. जितने भी भक्त हैं वो पूरे विश्व में हर स्थान पे माया के विरुद्ध इस युद्ध में भाग ले रहे हैं. And still, this is the beginning point. फिर भी ये स्थान आदि स्थान है जहाँ से Just like Naimisharanya is the hub of the universe. जैसे नैमिषारण्य पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है. So, universally speaking, this is the place that's holding everything together. तो हम अगर वैश्विक दृष्टि से देखें तो ये वो स्थान है जो सभी को एक साथ में रखा है. And in the same way that this is the place that will give special meaning, especially when the whole project is finished, it will give special meaning and special shakti to our preaching. और ये पूरा प्रोजेक्ट समाप्त हो जाएगा तो ये हमारे आंदोलन को एक विशेष अर्थ और विशेष शक्ति देगा. Hare Krishna. So one more question. I was saying we need one of those drones, that they have, could take the microphone. Krishna Maharaj, yes, thank you for such a wonderful class. My question, Maharaj, if you just tell me, when was your first meeting with Prabhupada and which quality of Prabhupada attracted you to him? तो महाराज जी से कृष्ण अनुरोध करें कि महाराज आपके बारे में हमें बताएं कि आपकी प्रॉपर्टी के साथ कैसे भेंट हुई और प्रॉपर्टी के कौन से गुण आपको आकर्षित हुए. At which point? Well, you can say I met Srila Prabhupada when I saw the devotees chanting and received one magazine in the university. तो आप कह सकते हैं कि महाराज कह रहे कि आप ये कह सकते हैं कि मैंने पापा जी से भेंट की जब मैंने भक्तों को जब करते हुए देखा और एक मैगजीन को विश्वविद्यालय परिसर में मैंने पाई. I became aware of Srila Prabhupada and his mission. और उस समय मैं श्री प्रभुपाद के आंदोलन के बारे में जागरूक हुआ. But then by circumstances I was drafted into the army. तो कुछ परिस्थिति ऐसी हुई कि मुझे सेना में भर्ती होना पड़ा. So I could not get out until the end of 1975. No. और 1975 के अंत तक उस सेना से बाहर नहीं निकल पाया. And then I met Srila Prabhupada in Mayapur and Vrindavan. So, और फिर महाराज कह रहे कि वो श्री प्रभुपाद से मायापुर वृंदावन में थे. Hare Krishna. His quality of compassion. प्रभुपाद जी का करुणा का जो गुण था वो महाराज जी को बहुत आकर्षित किया. Because that immense compassion is the driving force behind the Sankirtan movement. इतना जो दया है करुणा है ये इस कीर्तन आंदोलन के पीछे का जो शक्ति है. Srila Prabhupada had so many god brothers that were also pure, pure devotees. श्री प्रभुपाद जी के कई सारे गुरु भाई थे जो विशुद्ध भक्त हैं. But they didn't have that degree of compassion or that understanding of the desire of
of the spiritual master to push this Sankirtan movement all over the world. और उनको उस तत्व को उस मात्रा में उतनी करुणा नहीं थी कि अपने गुरु जी की इच्छा को समझ पाने की उतनी मात्रा में शक्ति नहीं थी तो संकीर्तन आंदोलन को विश्व में स्थापित कर सके। So it's not enough just to be a pure devotee. तो ये शुद्ध भक्त होना अपने आप में sufficient नहीं है। We have to also receive, be empowered by the parampara. हमें परंपरा के द्वारा विशेष आवेश भी होना चाहिए। Fully empowered. पूर्ण रूप से आवेश। Krishna Shakti Vina Nahi Tararavartana. So, this is the special understanding that Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur gave Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, and Srila Prabhupada took it and distributed it everywhere. और ये विशेष कृपा है जो कि श्री भक्तिनाथ ठाकुर भक्तिसिद्धांत ठाकुर श्री प्रभुपाद ने स्वीकार किया और पूरे विश्व हर जगह बांटा। Even one of Srila Prabhupada's prominent godbrothers said, "We thought this idea of every town and village was a metaphor." श्री प्रभुपाद जी के प्रमुख गुरु ने बोला कि ये यज्ञ ग्राम का जो असली अर्थ था वो सिर्फ उदाहरण के लिए था। But Swami Prabhupada has made it a reality. तो श्री प्रभुपाद ने उसको एक सत्य किया। He was very pure. और वो जो गुरु भाई थे वो बहुत शुद्ध थे। But still, he said that Prabhupada is Shaktivesh avatar. और उन्होंने फिर भी उन्होंने बोला कि श्री प्रभुपाद एक शक्तिवेश अवतार। That is a special quality of Prabhupada. ये श्री प्रभुपाद की विशेष गुण है। Of course, Prabhupada has so many special qualities. श्री प्रभुपाद के कई सारे विशेष गुण। Okay, that's good. पूछिए प्रश्न। I have one question that in order to become sincere soldiers, but before that the mind places so many obstacles. So how to handle that and become sincere? तो अगर हम शुद्ध बनना चाहते हैं, एक अच्छा सैनिक बनना चाहते हैं, तो मन हमारे रास्ते में बहुत सारे अवरोहण पैदा करता है। तो इनको कैसे हम इन सारे अवरोहण से कैसे निकल सकते हैं और अच्छे सैनिक बन सकते हैं? Just do as you're doing. जो आप कार्य कर रहे हैं, जो चीज कर रहे हैं, उसको ऐसे करते रहिए। The fact that you're sitting here and trying to be more Krishna conscious, that is what is required. ये अपने आप में साथ है कि आप यहाँ पे हैं, यहाँ पर क्लास सुन रहे हैं और कृष्ण भावना प्रकट करना चाह रहे हैं, यही चीज की आवश्यकता है। Whatever our mind is telling us, we must not hear the mind, we hear what the devotees are telling us, what Srila Prabhupada is telling us, what Krishna is telling us. तो हमारा जो भी कह रहा है उसको कहने दीजिए, उसको किनारे कर दीजिए। हमें सिर्फ जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जो भक्त लोग कह रहे हैं, उसको हम सुनो। Oh, if you hear Bhagavad Gita, you will become serious. अगर हम भगवद गीता श्रवण करेंगे तो हम गंभीर हो जाएंगे। And you are living in the home of Bhagavad Gita. आप तो भगवद गीता के घर में रहते हैं। You can get the full Shakti very quickly. और आपको पूर्ण शक्ति मिलेगी बहुत शीघ्र। Just remember that. Remember where you are. और जो आप हैं उसको अच्छे से स्मरण कीजिए। Just like Chaitanya Mahaprabhu said, anyone born in the land of India must be para upakar. तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि जो भी भारत भूमि में जन्म लिया है उसको परोपकार करना है। And you are in India and you are in Kurukshetra. No, you have more responsibility. तो आप तो भारत में हैं, तो सिर्फ भारत में ही नहीं है, भारत में रह के कुरुक्षेत्र में हैं, तो आपके ऊपर और भी ज़्यादा जिम्मेदारी है। So, being in a special place means that you have opportunities to learn and
and assimilate Krishna consciousness in a better way. तो आप विशेष छात्र होने का फायदा ये है कि आप यहाँ पे कृष्ण भावनामृत को अच्छे से सीख सकते हैं और कृष्ण भावनामृत में अच्छे से प्रगति कर सकते हैं. But along with that comes the responsibility of giving that to others. और उसके साथ में उत्तरदायित्व भी आता है. उत्तरदायित्व ये कि आप जो सीख रहे हैं अपने को दीजिए. We just can't think, oh, I'm more fortunate. No. खाली ये सोच कर बैठे नहीं रह सकते कि देखो मैं कितना भाग्यशाली हूँ. You think, I'm fortunate for some reason. Let me see what Krishna wants. मैं किसी कारण से भाग्यशाली हूँ. मुझे देखना चाहिए कि मैं क्या कृष्ण क्या चाह रहे हैं. It's not because I'm qualified, but it's because Krishna is giving me special mercy. इस वजह से नहीं कि मैं बहुत क्वालिफाइड हूँ. इस वजह मैं बहुत योग्य हूँ. इस वजह से कृष्ण मुझ पे विशेष कृपा कर रहे हैं. But if he gives you special mercy, you should not think, I've got this because I am so wonderful. और हमको विशेष कृपा मिलती तो ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे मिली है क्योंकि मैं बहुत विशेष हूँ. I got this because Krishna wants me to give it to others. और मुझे मिली है ये विशेष अवसर मिला है क्योंकि कृष्ण चाहते हैं कि मैं अपने को भी ये दूँ. Therefore, because Krishna has given you a special opportunity, then you have to be serious. कृष्ण ने आपको यहाँ पे ये विशेष अवसर दिया है. उसका मतलब ये है कि आपको और गंभीर होना चाहिए. Hare Krishna. Okay, I think one more question, then we'll have to stop. Thank you so much for wonderful lesson. One other question was like sometimes it becomes difficult to tolerate, and especially when people, things or situations don't come in a way which we wanted. So it really becomes disturbed, and then as this exercise become too tolerate, we really find it difficult to tolerate. So how can we deal with such situations? Well, कई बार हमारे पास ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती हैं जैसे कि हम चाह नहीं रहे हो, सोचा नहीं हो, प्लान ना किया हो और चीज़ें उस हिसाब से अगर नहीं घटित होती हैं तो उस समय सहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. तो हम उस ऐसी परिस्थिति को कैसे सहें? the second instruction that Krishna gives is tam titikshasva bharata. You must tolerate. तो भगवद गीता में दूसरा उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण ने है ताम तितिक्षस्व भारत. It's not like we have an option. So, हमारे पास कोई ऐसा नहीं कि हमारे पास कोई ऑप्शन है. this is coming from the Supreme Personality of Godhead. ये तो भगवान से आ रहा है. Although Krishna is very kind, he says, I've given you this knowledge, now you can decide what to do. भगवान बहुत कृपालु हैं. कह रहे हैं कि मैं तुम्हें ज्ञान दे दिया, आप डिसाइड कीजिए आपको जो करना है. But then he says, but if you don't take it up, you will do it anyway, but you will suffer. अगर आप अगर इस ज्ञान को नहीं लेते हैं और कुछ और करते हैं तो आपको फिर इसका भुगतान करना पड़ेगा. But if you take it up, you will become blissful. और अगर आप इस ज्ञान को स्वीकार करते हैं तो आनंद में जीवन रहेंगे. So, otherwise we will get the same results. The things that we're supposed to tolerate will come upon us anyway. तो अगर हमें जो चीज़ सहनी है वो चीज़ हमारे पास आएगी तो नहीं है, इस वजह से हमें तो सहना पड़ेगा ही पड़ेगा. Therefore, tolerate means don't be disturbed by it. Take it as Krishna's mercy. टॉलरेट का मतलब ये है कि हम उससे प्रभावित ना हो, उसको कृष्ण की कृपा के रूप में लें. Yasman no dvijate loko, loka no dvijate saya. Krishna says, don't be disturbed by anyone and don't disturb anyone. कृष्ण कहते हैं कि किसी और से प्रभावित ना हो, डिस्टर्ब ना हो और किसी और को डिस्टर्ब ना हो. So that's just Krishna is giving us the good advice. It will happen to you anyway, but if you follow my instructions, you won't just be tolerating it. You will become very dear to me. तो नहीं हम किसी न किसी ये परिस्थिति आपके साथ होनी ही है, परंतु अगर आप कृष्ण कहते हैं कि आप उनका उद्देश्य स्वीकार करेंगे. So thank you all very much for your kind attention. I hope that I have to leave for some time, but when I come back,
I can come and spend a little more time with all of you, and it's very inspiring to see your enthusiasm and desire to serve Krishna. तो आप सभी का बहुत ध्यान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और महाराज जी कह रहे हैं कि वो आशा करते हैं कि अब जो भी वो हैं आगे आए थोड़ा और समय यहाँ पे उनको के साथ में स्पेंड कर सकें। Thank you very much, Maharaj. We are enlightened by your presence and your lecture. So, सभी धन्यवाद है महाराज। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। So, Maharaj, my humble question is that every year, celebrate Gita Jayanti in a very big way. Our Guru Maharaj, Gopal, Krishna Maharaj, always used to bless us here on Pujan Day. So if you can book that day for us, so we will be very glad. There is an easy request for fulfillment. महाराज कह रहे हैं ये आसान ये ऐसी रिक्वेस्ट है जिसको आसानी से फुलफिल किया जा सकता है। मतलब महाराज कंफर्म कर रहे हैं कि गीता जयंती दिन वाले दिन महाराज हमारे साथ में होंगे। Thank you very much. So Maharaj is confirming his presence on Bhagavad Gita Jayanti Utsav at Sri Dharmkshetra Kurukshetra. Maharaj, we thank you for my lecture and association. Over the last few years, some devotees have just had completed their Bhakti Shastri course. So there are 4 devotees who had completed the Bhakti Shastri course. We request you to please hand over the certificates to them. First we have certificate for Shri Vasudev Prabhu. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare. तो थोड़ा उत्साह दिखाइए, इन भक्तों ने बहुत मेहनत करके अपना भक्ति शास्त्री कोर्स कंप्लीट किया। तो बहुत ताली कम बजा रहे हैं उनकी नॉलेज के लिए। इन भक्तों को वो भी सीबीए करने में ज्यादा हेल्प नहीं दी गई थी। तो बहुत मेहनत करके इन्होंने किया है, तो उनको जोर से हरि बोलिए, हरि बोल। और अगला सर्टिफिकेट है प्रेम सिंधु प्रभु के लिए, हरि बोल। हरि बोल। अगला सर्टिफिकेट है सुदर्शन प्रिय प्रभु का। सुदर्शन प्रिय प्रभु आप जानते हैं यह IIT रुड़की से गोल्ड मेडलिस्ट है। और अगला सर्टिफिकेट है श्रीमान प्रहलाद हरि प्रभु का। So, there's one person which has completed GBC College for Zonal Supervisor course.
सब तभी अच्छे से हो जाता सो महाराज जी का धन्यवाद देंगे। और पिछले वर्ष इस्कॉन कुरुक्षेत्र ने एक स्पेशल प्रोग्राम शुरू किया था जिसका गीता ओलंपियाड नाम था, सभी अवगत है। सो लास्ट ईयर महाराज वी हैड इन इस्कॉन especially in Haryana and Kurukshetra we had a very special program on Bhagavad Gita called Gita Olympiad. So this Gita Olympiad program was, we have a systematic youth preaching model where we go to the university, every one college, and we have a systematic course, 10-session course on Bhagavad Gita, and after this course on Bhagavad Gita we hold an exam, and the students who undergo that exam, top 200 students are selected, and they come for a residential workshop in Kurukshetra. So we were able to have a collaboration with the government of Haryana, with Kurukshetra University being the chief nodal center for this program. So by which we could go to all the colleges of Haryana. We had the permission to go to all the major colleges of Haryana, hold this program course, and a total of 15,000 students had participated. So last year in October, Parapuja Sri Gopal Krishna Goswami Maharaj had launched the program. So that was for year 2023. It was launched for the first time, and it was a pilot program. When the government had collaborated with us, they said that maximum perhaps 2,000 students will participate. We said no, at least we'll have 5,000 students registering, but Krishna had his plans for 15,000. Hari Bol. So Maharaj, we want to present a report. We want to present a report of that program to you. Hari Bol. We'll make a payroll to our Sakya. So this Gita Olympiad report of 2023 being presented to Maharaj. And now for the year 2024, we want to launch the Gita Olympiad program for 2024 from the hands of His Holiness Swami Maharaj. Please stand. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Thank you very much. So now every devotee will get an opportunity to receive Mahaprasad from the lotus hands of Maharaj. To request everyone to come in line to accept Mahaprasad from Hare Krishna. Like that will be.